सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक पैनल डिस्कशन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ जो पैनल में रहेंगे वो डॉक्टर संजय कुमार जैन हैं, जो वाटर रिसोर्सेज सिस्टम डिवीजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की से है, और डॉक्टर रनोज भी उन्हीं के साथी हैं और वो भी इस पैनल डिस्कशन में रहेंगे। डॉक्टर संजय कुमार राय वाडे इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून उत्तराखंड से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष मेहता और डॉक्टर विनीत भी वाडे इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से हैं, और ये सब उत्तराखंड की जो एक त्रासदी अभी भी कुछ दिनों पहले हुई है 7 फरवरी को, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो साइंटिफिक रीजंस इसके बारे में हो सकते हैं। तो आप सभी का पैनलिस्ट का स्वागत है एक बार। और जो विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम इस पैनल डिस्कशन को देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। ये YouTube के चैनल NSCD TV ऑफिशियल पर लाइव स्ट्रीम हो रही है, और इसका एक रिकॉर्डेड वर्जन भी हम लोग फेसबुक पर डालेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं और आपको इंट्रोड्यूस करता हूं श्री NR अय्यर, N रामदास अय्यर। ये हमारे एजुकेशन सेक्शन के हेड हैं और क्यूरेटर, सीनियर क्यूरेटर है नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में। आज की इस चर्चा को श्री अय्यर आगे ले जाएंगे, और मैं आगे फिर ये प्लेटफॉर्म श्री अय्यर जी को देता हूँ। धन्यवाद। Welcome to all of you. And I first of all apologize for my bad throat today. I am not an expert in this field, but like everybody in India, I am someone who is concerned and someone who is very interested in knowing what exactly happened on the 7th of February in Joshimath. Now, incidentally, I was there in Uttarakhand on that day. I had gone to Almora, and while I was returning, I was perhaps in Bhimtal when I heard about this incident. And it was rather tragic, because earlier once in 2003 when I was in Bhutan, I had gone to see the Punaka Dzong, where also I heard that some years back such an event had occurred in Bhutan also. Later, after reading, I came to know that this is a fairly common occurrence in the Himalayan region, not just in the Himalayan region, in the Swiss Alps, in the Andes in South America, and in many mountainous regions where there are glaciers. And what the common man understands, what has been written in newspapers, etc., is that this is a glacial lake outburst event. I would like to know more about this from the experts, and we'll talk to all of you in detail. I will not encroach into your territory. I'll just facilitate this discussion by asking some questions on behalf of the viewers. And may I now request Dr. Renoj Tayan to please explain a little about what exactly this event is. Renoj sir, unmute please. Yes, sir, please. Thank you, Dr. Iyer. After this event happened on 7th February, we were all very much anxious to know what was actually happened in that area. This is a winter time, and that area has experienced heavy snowfall a couple of days before. And we have an ongoing project under National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem, under which Dr. Sanjay Jain sir
participating in this panel discussion is leading a study on growth in the Upper Ganga Basin. And when such catastrophic events occurs, we always tend to think that there is no other option but to have a glacial lake outburst flood. But the timing of that area and the research we did prior to this actually suggesting that there is less chance of such an occurrence, because in winter the entire area in the high elevation regions are frozen, and that is time of snow cover also, and that's the time we have less chance of a glacial lake outburst flood happening. And also our inventories suggest that in those area, in the Rishiganga basin, there's not much of vulnerable lakes exist in that area. So later, I think the entire global scientific community was keen to establish what's actually happened. And the best way in this kind of scenario is satellite imageries. And as you all know, that the high mountain areas are highly inaccessible in the normal times, and especially so in the winter time. So the satellite imagery, which provided very detailed of what is actually happened, and the National Institute of Hydrology, we think that it is a case of a falling off a glacier, hanging glacier, existed in the surrounding catchment in the Rishiganga basin. And this is not a regular event. Though we all know that it is, we all aware of the dangers of glacial lake outburst flood. We also know the dangers of landslide, dammed glacier, dammed outburst. It actually happened in 2015 in the Fudkal river in the Sanskar region. And there are a number of such events happened even in the Upper Ganga basin also in 60s and 70s, couple of such incidents. So this is still a evolving times for the exact reason for this event. And there are a number of possibilities which we need to look into, and because this area is snow covered. So, but what is very clear is that a hanging glacier has fell off from this area. If I can present a couple of slides on this, I think I can explain better. May I do that now? Sure, sir. Please go. The slides are visible now? No. You will have to present the slides. Yeah, I am doing that. Present now. Yeah. So anyway, You can I think tell if you are not able to. yeah. So this hanging glacier is around 1 kilometer long and 500-meter wide. This is having an area of 0.5 square kilometers of area. And hanging glacier, in the upper reaches of this region, we know there are wide glaciers. This hanging glacier actually sits on a mountain ridge, and that is why this name has come, that it is hanging from the mountain slopes. And there are a number of such hanging glaciers. If you look at the imageries, you can see a number of them. But it is a very rare event that such hanging glacier comes off from the mountain slopes and creates such a huge devastation. And it is also a matter that, so this, now we are evaluating that almost 10 million cubic meters of water around is possibly held by that hanging glacier can actually melt and create this devastation. And this hanging glacier actually
the site, the NTP site, the main river Dauli Ganga, it's around 14 kilometers from the sites of this hanging glacier. So it's traveled all the way and brought a lot of debris along with it and created this huge catastrophe. And we feel that it is because of the debris, the frictional melting is one of the cause of having this huge, ice mass and ice rock mass has melted during its traveling time from the and it is created huge catastrophe. So this is not a, as I said before, this is not a regular event. So we need to investigate more on its reasons and causes. And I think other panelists may have, because the Water Institute, Manish Mehta and the team went to this site and they can explain better on what actually happened on this issue. Thank you, Dr. Tayyan. Now, if I understand correctly, when there is a glacier, a hanging glacier or any glacier as you mentioned, this slowly melts when in the onset of summer and forms a melt lake down below. And when the melt lake is formed, there is a body of water and it stands there as a lake. And suddenly when a huge volume of maybe ice or a rock, landslide, whatever falls on that melt lake, then there is an outburst of water from that lake which comes down it comes downstream and causes sudden flash flood. This is what actually occurred there on that day, is what the general public understands. And I would like to know a little more from Dr. Jain if this is what actually happened. Okay, thank you. As told by my colleague, Dr. Renaud, that a hanging glacier actually burst and that created this calamity. लेकिन जैसा आपने बताया कि कोई एक वहां पर लेक जनरेट हुई, जैसा कि हम लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात करते हैं, तो कोई लैंडस्लाइड होता है उसकी वजह से डैमिंग होती है, तो जो पानी का अमाउंट है, जैसा कि लगता है कि कोई डैमिंग वहां पर हुई उस टाइम के लिए, और वो जो ग्लेशियर का उसमें टूट के गिरना, उसकी वजह से वो डैमिंग हुई एंड देन सडनली दैट मच ऑफ वाटर एकदम से आया. तो ये एक पॉसिबल रीजन लगता है. जो सैटेलाइट डाटा अभी 6-7 फरवरी के हमें मिले बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट, एंड देन वाडिया टीम विजिटेड दैट प्लेस and they have given some pictures of that area. So it seems that hanging glacier that broken was certainly there, but all of a sudden that much of amount water came that shows that there was some damage. So maybe Manish Mehta or Santosh Rai will give better picture of this in their explanation. Thank you, Dr. Jain. डॉक्टर मनीष मेहता, आप सुनते वहां पे गए थे और यू हैव टेकन फोटोग्राफ्स, यू हैव स्टडीड दिस साइट एंड यू हैव एक्चुअली ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड. तो आप जरा कुछ साइट कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं और क्या उसके बारे में जाना गया, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? डॉक्टर मेहता. Dr. Mehta, you can unmute and. डॉक्टर मेहता, आपका माइक शायद म्यूटेड है. या डॉक्टर संतोष राय बता पाएंगे कुछ? Yes, I will try to explain, sir. I think there is some connection problem in Manish's connection. So what have our team visited there in the higher reaches of Rishi Ganga through a helicopter survey, and they found that there is a clear evidence that one of the higher reaches tributary, that is called Rauthi Ganga, Rauthi Gadera, which is
above the 6,000, nearby 6,000 meter height, and they captured some images which clearly indicate that a triangular block of old ice mass is chopped off from the host location, and it went down, and at the same time it was coming down to the glacier higher reaches. It also incorporated lot of snow which was available during its transport at relatively lower heights, but which was also suggested by Indian Institute of Remote Sensing images, as was disclosed by Director IIRS Dehradun, and it demonstrated that on 2nd and 3rd February there was no ice, also snow precipitation in that region, but on 6th and 5th and 6th they found a lot of ice lying there, and which was not present at the 7th at 12 o'clock. So this demonstrates that that area was heavily precipitated with fresh snow, which was also incorporated while the big old ice chunk was traveling down, and a mixture of this old ice containing some moraines and this fresh ice and gravel, rock fragment and soil in between. So it formed some sort of admixture of material which finally took momentum from under the acceleration due to gravity, and finally it approached towards down, and it finally blocked the Ganga river, and again it moved towards this rainy gram, and finally fell into the Dhauli Ganga, and this Dhauli Ganga was also blocked for a temporarily it was also blocked. So backwaters of Dhauli Ganga again moved up, and there was a transient stay of water which was finally broken, and a lot of this combined water mass moved towards Tapoban, and finally it caused the devastation in the Tapoban power project. Thank you, sir. We in fact expected Dr. Anil Prakash Joshi also to be with us, but he has sent us a video recording which we will see later. But I wanted to ask you whether this is not, as far as I can see, an event which can be prevented. It occurs, and there are glacial lakes all along the Himalayas, and there are a lot of glacial lakes in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Ladakh in India. And we cannot perhaps predict or even prevent this. At the most, what we can do perhaps is take precautions. So what precautions can people take, people who are staying along the banks of rivers that are fed by these glacial lakes, what precautions can they take so that there are no serious effects because of such events? I leave the floor open. Anybody who is willing to talk about this can please enlighten us. Yes, I would like to just briefly explain what you have said. Yes, Dr. Jain. Yes. Yeah. As you have said that we have number of glacial lakes in different parts of India, whether it is Uttarakhand, whether it is Himachal Pradesh or J&K or Sikkim. So there are number of glacial lakes. So we have to have an inventory of all the glacial lakes first, so that we can see the lakes which are going to be vulnerable with the time. So we can use satellite data of the last, say, 20-30 years, and we can map all the lakes first, and then we can see which are the lakes which are vulnerable on the basis of certain criteria. अभी आपने जैसा कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर इस तरह की लेक बस्ट होती हैं और एक नेचुरल रीजन से हो सकती हैं, तो हमें क्या-क्या उसमें मेजर्स लेने चाहिए. तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एनडीएमए ने एक गाइडलाइंस बनाई है पिछले करीब 1-1.5 साल के प्रयास से, जिसमें कि 20 इंस्टीट्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट था,
यहाँ पर डॉक्टर संतोष राय हैं, वो भी उसके एक मेंबर रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर DV डोभाल थे। तो 20 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर के करीब 1.5 ईयर्स में वो गाइडलाइंस बनाई है। उन गाइडलाइंस में जैसा आपने बताया कि चैप्टर वाइज उनको सब एक्सप्लेन किया है। तो वो जो चैप्टर है उसमें पहले ये है कि आपको ग्लेशियर लेक की आइडेंटिफिकेशन है, वल्नरेबिलिटी है, देन हैजार्ड एंड रिस्क जोनेशन मैपिंग है, देन मॉनिटरिंग, रिस्क रिडक्शन एंड मिटिगेशन। ये मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जो उसमें हमने इंक्लूड किए हैं। एक सबसे जरूरी जो काम वो है अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस। जैसा कि आप भी कह रहे थे कि अगर ये इवेंट होता है तो वहाँ के लोकल लोग कैसे उसको हम उनको अलर्ट कर सकते हैं या कैसे हम उनको अवेयर कर सकते हैं, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हमने किया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, जिससे कि वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या टेक्निकली अगर हमें देखना है कि अगर लेक आउटबर्स्ट होती है तो उससे जो पानी निकलेगा वो नीचे के क्षेत्र में कितना फैलेगा, जिससे कि हम क्षेत्र तक उस लेक के फटने की स्थिति में ये देख सकते हैं कि वो लेक का पानी कितना इस क्षेत्र को जलमग्न करेगा, जैसा कि हम कहें, और उससे हम कैसे उससे बच सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स एक चैप्टर उसमें दिया है, R&D का एक चैप्टर है, रेगुलेशन एंड रीएनफोर्समेंट एक बहुत जरूरी है। जो भी हम बाईलॉज या कोई भी रूल्स बनाते हैं उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइन। तो ये जो चैप्टर्स उसमें दिए हैं NDMA की गाइडलाइंस में, जो NDMA की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो ये रिसेंट में ही अभी जारी की गई है। और अभी इसी कड़ी में आगे कुछ मीटिंग अभी हुई है NDMA के साथ। वो एक पायलट प्रोजेक्ट की बात है जो हम सिक्किम में लेने की बात थी। उसमें ये था कि हमारा जो एक अलार्मिंग सिस्टम या अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसकी की बहुत जरूरत है। अगर हम कोई भी इवेंट होता है और अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम नीचे के लोग अलर्ट कर सकते हैं, तो पहले तो है उनकी अवेयरनेस, जिससे कि लोगों को अभी 2 इवेंट होने से काफी लोग इस बारे में जान गए। जब से जैसे चौराबाड़ी लेक का जो इंसिडेंट 2013 में हुआ, then people are now well aware that this kind of event can happen. तो अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है, जिससे कि एजुकेशन प्लान, जैसे हम उसमें एक मॉक ड्रिल की भी बात की गई, या एजुकेशन प्लान हमारा क्या होना चाहिए अगर हमारा नीचे का क्षेत्र है उसमें अगर हमारा इस तरह की फ्लड आती है, जैसे अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात करें या और भी कोई इंसिडेंट होता है, उसमें लॉट की भी बात है, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ये गाइडलाइन जो है ये एक अच्छा भी एक स्टेप NDMA का रहा है। और इस बारे में दूसरा एक और एस्पेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया हम मॉडलिंग करते हैं। जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पास कुछ स्टडीज आई थी, तो उसमें जो मॉडलिंग है हाइड्रोलॉजिकल मॉडल, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि रिवर के दोनों तरफ कितना एरिया में सबमर्जेंस होगा, तो वो भी एक हमें सारे हमें एरिया का जोनेशन हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम पहले से ही उस एरिया में जितना भी सेटलमेंट है उनको वहां पर प्रॉपरली मैनेज कर सकते। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग एंड उन सब की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि हमारी जो वहां पर नुकसान है जान माल का, उनको हम कम से कम कर सकते। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप कह रहे थे एक गाइडलाइंस NDMA की तरफ से आई है और उसके बारे में थोड़े डिटेल्स भी आपने दिए। ये सुनने में आ रहा है कि नेपाल इसके बारे में काफी कुछ काम किया है और ये पूरा इन्वेंटरी बन चुका है ग्लेशियर लेक्स के बारे में नेपाल के, और कौन कितना वल्नरेबल है और कब क्या हो सकता है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ नेपाल के कदम थोड़े ज्यादा आगे हैं कंपेयर टू इंडिया, ये सुनने में आ रहा है। क्या मतलब ये सही है? जैसा कि आपने कहा कि नेपाल में एक रिपोर्ट बनी है ICI मोड, वहां पर एक इंस्टीट्यूट है जो कि हिमालय क्षेत्र में काम करता है, उन्होंने इन्वेंट्री की रिपोर्ट बनाई है। इसी तरह से इंडिया में भी NRSC रेगुलरली एक इन्वेंट्री मैप बनाते हैं, या जैसे वाडिया की भी एक बार इन्वेंट्री बनी है। हमने भी अभी पिछले NHT में, जैसा डॉक्टर रेनॉल्ड्स बता रहे थे, कि हमने भी कुछ बेसिन में इन्वेंट्री बनाई है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं तो हमने भी 1990 से टिल 2019 हमने ग्लेशियर लेक की मैपिंग की। तो ये लेक की जो मैपिंग है इनकी अपडेटिंग बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहें कि हमने एक 2019 में 2018 में लेक इन्वेंट्री तैयार की है, दैट इज सफिशिएंट। सो वी हैव टू रेगुलरली अपडेट आवर डेटाबेस सो दैट वी कैन what are those lakes which are expanding over the years, so that updating is very much required. अगर मैं गंगा की बात करूं तो अपर गंगा बेसिन में हमने देखा कि 1990 में देर वर अबाउट 140 lakes,
and now there are about 200 lakes. Because of the climate change, we can say that glaciers are mostly receding, and because of the retreat of these glaciers, there are chances of creation of more than lakes. तो इन्वेंट्री हमारे यहाँ पे एनआरएससी है या वाडिया है या एनआईएच है या आईआरएस है, तो रेगुलर इन्वेंट्री हमने सब बनाई है और वनरेबिलिटी भी हमने चेक की है। जैसा कि अगर हम देखें तो गंगा में कोई क्राइटेरिया के हिसाब से वनरेबल लेक नहीं है, लेकिन सतलज, ब्यास, चिनाब बेसिन की बात करें तो कुछ लेक हैं वहां पर जो वनरेबल है। सिक्किम, तीस्ता बेसिन में there are about 10 lakes which are vulnerable. So there are number of lakes which are vulnerable and mapping regularly are being carried out in our country also. थैंक यू सर। अभी वाडिया इंस्टीट्यूट से अगर कोई डॉक्टर मेहता या डॉक्टर विनीत कुमार अगर बता सकते हैं कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी और इस तरह के जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इवेंट्स के बीच कुछ रिलेशन है या कुछ इसके बारे में कोई प्रकाश डाल सकते हैं आप? मनीष मेहता का शायद कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर संतोष राय कुछ अगर डॉक्टर राय सर, मैं बताना चाहता हूं कि टेक्टोनिक प्लेट्स और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज तो सिज्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में हमेशा हमारे यहाँ वाडिया इंस्टीट्यूट में एक स्ट्रांग ग्रुप है जो कि उसका अध्ययन हमेशा करता रहता है, और समय समय पर जो रिकॉर्ड करके जो उसके इवेंट्स हैं हमारे सीधे वी साइड से वाडिया इंस्टीट्यूट के कंट्रोल रूम से आती रहती हैं। तो उन लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट वहां विद्यमान है, उन्होंने ये खबर इंफॉर्मेशन दिया है कि इस प्रकार का पॉसिबिलिटी जो है इस पर्टिकुलर ऋषिगंगा के केस में नहीं पाई गई है। बट उन लोग लैंडस्लाइड का जहां तक सवाल है वो एक प्लॉजिबल हाइपोथेसिस अभी भी हमारी जो प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स टाइम के साथ ये इवॉल्व करेगी, लेकिन प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो जो ओल्ड आइस मास है उसी से ट्रिगर होते हुए और फाइनली इट इनकॉर्पोरेटेड लॉट ऑफ fresh snow and debris along its way, and finally it washed out these two structures. जहां तक इसका सवाल अभी आप पूछ रहे थे कि नेपाल हम लोगों से आगे है, तो इस मामले में हम लोगों में भी उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल की ग्लेशियर लेक की इन्वेंट्री वाडिया इंस्टीट्यूट में बनाई गई है, और जम्मू कश्मीर के पर काम अभी भी जारी है। और इस पर ऑलरेडी राकेश भामरी जो भी इस समय पोस्टडॉक यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में चले गए हैं, पहले यहाँ एज ए साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये बनाया था, और उनमें से उत्तराखंड में 10 158 कितने ग्लेशियर लेक्स के बारे में उन्होंने सूचीबद्ध किया था, जिसमें से 10 और 11 लेक्स को उन्होंने अपने क्राइटेरिया के अनुसार वल्नरेबल पाया था, जिसमें इस जो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स में जो पॉसिबल लेक्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने उसके बारे में वर्णन किया है। तो अब ये सवाल ये भी है कि आप बता रहे थे रेमेडियल मेजर क्या होगा, तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी कोई पावर प्रोजेक्ट पास हो तो उस पर साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड मॉनिटरिंग को मैंडेटरी करार दिया जाए। जैसे कि डूब क्षेत्र में आने के लिए सोसाइटल फंडिंग एक जरूरी करार दिया जाता है, वैसे ही जैसे कि मान लीजिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आप 2% 2 करोड़ रुपया जो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम उस एरिया में सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग की स्टडीज के लिए कि अगर कभी यहाँ से पानी इतना मात्रा में आया तो जैसा कि जैन सर बोल रहे थे कि वो कितना दूर तक जलमग्न करेगा, इस प्रकार की स्टडी अगर होकर रहती तो शायद इस चीज को हम लोग थोड़ा लॉस को मिनिमाइज कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे। ऑफ कोर्स इस प्रकार की जो नेचुरल हैपनिंग्स होती हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स उनसे बचाव और उससे राहत पाने में जरूर मदद मिल सकती है सर। जरूर कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं लेकिन एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटीज जिसको कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है, डैम बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये किस हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरह के इवेंट्स को ट्रिगर करने में, और इसको लेके क्या किया जा सकता है? Anybody can enlighten us on this? Yeah, I think
the anthropogenic activity in this area in general that is contributing to the climate change. But I want to come back to the earlier point of how we can prevent or mitigation effort Yes. of this glacial lake. And I think I can present this screen now. Yes. I think now it is visible. Like we Hello. नहीं So, because the mitigation is one of the most important aspect of any of such events. Yes. We can, because especially in the case of glacial lakes, we can have mitigation effort because this glacial lakes um, breaks when the water in the lake, increases during the course of this enhanced glacier melting, and also because of the susceptibility of the dam, the moraine dams. So this can be monitored in a proper way, and we can have water can be evacuated safely, and the threat of the glacial lake can be minimized or even nullified through the mitigation effort. And I think we should focus more on in the future times. We should focus more on that kind of assessment, that kind of work. And in this case also, if it is visible, my presentation. So here this glacier, once we see that it is hanging glacier, what we mean by glacier is when we hear the name of a glacier, it is a moving mass of ice. And it is in millimeters and centimeters in meters. The bigger glacier moves in 5 to 10, 15 meter in a year. And in this small kind of glacier moves in centimeters and millimeters. But certainly there is a movement when we hear the name of a glacier. That is why the term glacier is being given. So this hanging glacier is also moves, and proper monitoring of such movement by using satellite interferometry and other techniques is available nowadays. This we can have a clear information about its imminent collapse. So such kind of studies actually we need to initiate in this region, and that is one thing which we can do for mitigation effort. And coming to the climate change aspect, we all know that the Himalayas are very, experiencing Yes. significant warming during the last couple of decades. And this is actually translating into the higher glacier health and reduced snow cover in this region. And they are also, especially in the lower elevations. And it actually have impact on the glacial systems, and glacial systems are becoming more vulnerable. Unfortunately, we don't have sufficient institutional mechanism in the country because we have large, more than 15,000 glaciers across Himalaya, and we don't have that kind of capacity, institutional capacity, to monitor this area. So we need to focus more on research and then arrive at strengthen our systems to have an efficient early warning and mitigation system in place so that we can minimize the impact of climate change happening related incidents in this area. I am told Dr. Manish Mehta is also able to connect now. I wanted to know a little more about the role of remote sensing because ISRO is doing a lot of work and remote sensing is fairly advanced in the country. Can remote sensing help in identifying vulnerable glaciers, vulnerable glacial lakes, and when such events can occur? Can we discuss a bit about the role of remote sensing in this?
Good evening, sir. Good evening. Good evening. I am Manish Mehta with Yes. Vinit Kumar. Yes. My colleague Vinit Kumar give the answer of these questions. Yes. Good afternoon, sir. This is Vinit Kumar from Vadia Institute. Yes, sir. Of course, हम remote sensing से कर सकते हैं. We can trace some potential areas or also the threatening areas we can mark. जी. लेकिन उसके लिए सर हमें हाई रेजोल्यूशन डेटा की काफी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यूजुअली जो हाई रेजोल्यूशन डेटा हमारे पास इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का है सर वो 23.5 मीटर्स का हमारे पास लिस्ट 3 है. बाकी अदर डेटा सेट वी हैव टू परचेज फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक 5.8 मीटर अगर हम लिस्ट 4 को लेते हैं तो वो फिर हमें परचेज करना पड़ता है सर. इवन अभी पास्ट 2 डेज में भी एक मीटिंग थी हमारी एनडीएमए से तो उस पे भी एनआरसी भी थी वहां पे, दे वर इन्वॉल्व इन दैट. तो वहां पे भी यही डिस्कशन था कि अगर हम हाई रेजोल्यूशन डेटा सर शेयर करें अमंग एजेंसीज और अपने अदर एजेंसीज के थ्रू इंडिया में जितने भी हमारे एजेंसीज है लाइक आईआरएस है, एनआरएससी है, सो हम अगर इंटरलिंक करके हाई रेजोल्यूशन डेटा सेट एज सुन एज पॉसिबल अगर आपस में शेयर करो तो मे बी वी कैन रिड्यूस समथिंग और फाइंड आउट व्हाट आर द पोटेंशियल जोन्स. So this data sharing policy should be between the institutions, sir, and particularly the high resolution. Otherwise, तो sir 23.5 मीटर resolution के डेटा से करना थोड़ा सा, क्योंकि ग्लेशियर का डायमेंशन भी जैसे अभी हैंगिंग ग्लेशियर जो अभी फॉल हुआ है उसका डायमेंशन हाई रेजोल्यूशन डेटा में ज्यादा अच्छा आएगा, उसका एरिया काफी एक्यूरेट हम मेजर कर पाएंगे. So that is the main thing. Yes, we in the direction of remote sensing we can involve remote sensing because it is the prime tool, sir. Thank you, sir. I wish we had somebody from ISRO here so that because our capability in remote sensing in space sciences is so high, we do a lot of work even for countries abroad. So if there is a mechanism to share in real time the remote sensing data, then perhaps we may be able to do something and predict such events better, and I hope something will come up in this direction. Exactly. अभी मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी. जैसे विनीत ने भी बताया कि हमारा जो डाटा शेयरिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी सर. और इसमें डे बिफोर यस्टरडे टीएसटी ने अपनी कुछ पॉलिसी जारी की है जो जियो स्पेशल डाटा है यू कैन शेयर बिकॉज जो ये वेबसाइट पे है सर, आई हैव सीन टुडे वेबसाइट पर आ गई है. तो इस यूनिटी की गाइडलाइन के आने से जो डाटा शेयरिंग है वो थोड़ा और इजी भी होगा और अवेलेबल भी होगा, क्योंकि अगर हमारे पास हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा होगा जो कि इवन सब मीटर रिजोल्यूशन का सैटेलाइट डाटा भी अवेलेबल है, लेकिन वो हमें लेना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव है. तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो हमारे पब्लिक डोमेन में या फ्रीली मिलने लगे और वो रियल टाइम में मिल सकता है बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, क्योंकि एक सैटेलाइट का रिविजिट टाइम कुछ होता है जैसे 18 to 20 days. तो अगर हमारे पास रेगुलर इंटरवल पर हाई रिजोल्यूशन डेटा मिलता है तो देन इट इज वेरी गुड. एंड उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि लेक का साइज का बढ़ना वो तो हम देख ही सकते हैं, उसके साथ साथ वो कितना ग्लेशियर की स्नाउट पर है, क्या वहाँ मोरेन डैम लेक तो नहीं है, इस तरह की जो फीचर्स हैं जो हम रिमोट सेंसिंग से ले सकते हैं. तो वो डेफिनेटली हम उसकी बेसिस पर ही जितनी इन्वेंट्री बनती है वो सारी हम सैटेलाइट डाटा से ही बनाते हैं और रेगुलर इंटरवल पर बनानी है तो उनको हमारे या अपडेट करना है तो हमारे पास एक सोर्स जो है वो रिमोट सेंसिंग. और इसमें इतना एडवांसमेंट है कि हम सैटेलाइट डाटा के इंटरप्रिटेशन से ग्लेशियर लेक की इन्वेंट्री रेगुलर बना सकते हैं. थैंक यू सर. तो कुछ अभी वैसे चल रहा है डिस्कशंस बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस के बीच में कि फ्री में ये डेटा अवेलेबल किया जाए इन रियल टाइम सो दैट समथिंग यूजफुल कैन बी डन. जल्दी ही कुछ होगा इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, ये चलता रहता है. जैसे मैंने बताया डीएसटी ने अभी ये जो पॉलिसी बनाई है डाटा एक्वायरमेंट और प्रोड्यूसिंग की, तो एक तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि ना कि इस क्षेत्र में बाकी हर क्षेत्र में काफी यूजफुल होगा. बाकी अगर इसके बारे में अभी कोई एक एनडीएमए की मीटिंग भी थी जिसमें मनीष मेहता और हमारे यहाँ से मनोज थे या एनआरएससी के लोग थे, तो हो सकता है कि इस बारे में कोई चर्चा हुई तो उसके बारे में थोड़ा ही बता सकते हैं मनीष या विनीत. मेहता साहब कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? कुछ डिसीजंस हो रहे हैं इस डायरेक्शन में? किस मीटिंग में? डॉक्टर मनीष मेहता, ये yes sir. रियल टाइम डेटा शेयरिंग बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस. यस जो एनडीएमए की मीटिंग हुई थी परसों
हुई थी जो मीटिंग, जी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें डेटा शेयरिंग की बात हुई थी, लेकिन एनआरएसए ने बोला था कि हम जो हाई रेजोल्यूशन का डेटा है वो अपने पोर्टल में डालेंगे। बेसिकली उस पोर्टल के थ्रू जो है हम लोग भुवन में सर, भुवन के थ्रू जो है हम लोग उसको एक्वायर कर सकते हैं, उस रीजन का डेटा, वहां से जहां से भी जो भी रीजन होगा उस रीजन का डेटा। तो कुछ बातें हुई थी उसमें डेटा शेयरिंग की, लेकिन अभी सिर्फ वर्बली ये बातें हुई है, आगे इसको मिनट्स और उस चीज में आया नहीं है। ये तो अभी देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस चीज को। अच्छा, इस चीज में एक बार और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ग्लेशियर लेक और ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, और पूरा जो है पूरा कंसंट्रेशन जो है ग्लेशियर लेक और ग्लेशियर पे ही ज्यादा लगा रहे हैं कि भाई जो फ्लड और ये सब चीजें जो है वो ग्लेशियर या ग्लेशियर लेक की। तो हमको इसमें एक चीज और जोड़ना पड़ेगा कि बेसिकली वी आर वाडिया इज फ्रॉम जियोलॉजी बैकग्राउंड से है, तो इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हिमालय इज वेरी हाईली यंग एंड फ्रेजाइल जो माउंटेन सिस्टम है। और यहाँ पे जैसे अभी इस बार का जो ऋषिगंगा का जो इवेंट हुआ है, वो इवेंट बेसिकली ग्लेशियर के साथ साथ एक रॉक मास भी बहुत बड़ा जो है उसमें गिरा हुआ है। तो हमको थोड़ा सा ये सब चीजें सोच के चलना पड़ेगा कि जो भी कंबाइंड स्टडीज है उसमें तो ग्लेशियोलॉजी एंड जियोलॉजी को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी आज तक रिपोर्टेड जो भी फ्लैश फ्लड या केदारनाथ डिजास्टर को छोड़ दें हम तो, और जितने भी डिजास्टर यहाँ पे हुए हैं मैक्सिमम लैंडस्लाइड डैमिंग से हुए हैं, जैसे आप गोना और इस साइड जो भी बड़े बड़े जो लेक बनी है। तो हमको इन दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेल्टिंग से आपका टो इरोजन और टो इरोजन से लैंडस्लाइड और लैंडस्लाइड के बाद ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग के बाद जो है फ्लैश फ्लड, ये सब एक साथ एक पैरेलल प्रोसेस है हिमालय रीजन में। तो ये जरूरी है कि हम जियोलॉजी का एस्पेक्ट भी लेके इसमें चलें। अब हमारे राय साहब कुछ, संतोष राय साहब कुछ बोलेंगे इसमें। हाँ, जो मैं यही पहले पूछ रहा था कि टेक्टोनिक एक्टिविटी का इसमें कहाँ तक कोई रोल है अपार्ट फ्रॉम ग्लेशियोलॉजी, क्योंकि 2-3 छोटे अर्थक्वेक्स भी महसूस किए गए हाल फिलहाल में यहाँ पे, तो क्या उनका भी कोई इफेक्ट हो सकता है इन अपार्ट फ्रॉम ग्लेशियोलॉजी? कोई टेक्टोनिक इफेक्ट्स भी क्या इनमें कोई रोल प्ले किए हैं? यही मेरा एक सवाल था। अभी सर रिलेट कर पाना जो टेक्टोनिक का जो भी, जैसे अभी हम लोग भी सुन रहे हैं, अभी कोई शॉर्ट डेटा सेट अभी निकल के नहीं आया है सर किसी भी एजेंसी का कि कहाँ पे है, क्योंकि सर फिर ये रिलेट करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड क्या था और एपिसेंटर कितनी डिस्टेंस पे है। अगर 300-400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एपिसेंटर है तो शायद अभी कोई शॉर्ट डेटा सेट या शॉर्ट डेटा सेट आए सर, लेट द कंपनी रिपोर्ट लाइक एनजीआरआई है, वाडिया इंस्टीट्यूट इटसेल्फ इज डूइंग समथिंग, सम एनालिसिस इन अर्थक्वेक पर्सपेक्टिव आल्सो, बट अभी शॉर्ट थ्योरी नहीं है सर। सो लेट इट कम आउट, देन वी विल एक्सप्लेन कि मे बी कि हम शायद पहले कुछ आइडेंटिफाई कर पाए कि ऐसे कुछ पल्सेस रिकॉर्ड हुए हैं और दोस माइट हैव अफेक्टेड दैट पर्टिकुलर एरिया और नॉट। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम सर। तो हमें क्या अभी लेसन्स मिली हैं इस इवेंट से या इस तरह के इवेंट्स जो हुए हैं इन द रीसेंट पास्ट, इससे हम लोग अलग अलग ग्लेशियोलॉजी हो या टेक्टोनिक्स हो या रिमोट सेंसिंग हो या एनवायरमेंटल साइंसेस हो, क्या हम लोग लेसन्स लिए हैं इनमें से, ये थोड़ा जानना चाहूंगा। बेसिकली सर मैं जी यस रेनो सर प्लीज you can continue please. Anybody yes. So I was just wanted to mention that when we approach developmental issues in the hills, and we cannot see this individual events in a standalone fashion, because we have now experienced this kind of event, and this area is known for cloudburst and extreme rainfall events. As a matter of fact, we conducted a study in this national mission on sustaining Himalayan ecosystem. During the last 10 years, 2010 to 2020, we have identified 57 extreme events and cloudburst events in the Upper Ganga Basin. And Chamoli districts emerged as one of the hotspot of cloudburst event also. So we need to look into this disaster aspect in a holistic way. And because this is a very critical aspect, and we also in our study in this project, we also found that there is a dividing, Himalaya mountains is very complex and it has got a lot of topoclimatic regimes. So
there's a clear defining topographic control of climate in this region, and the southern slopes having a very high monsoon, and those are the regions very susceptible for the cloudburst and other kind of incidents also. So the actually what we are seeing here is some sort of a science deficit in planning and policy implementation is very clearly. So we need to address this issue, and in this, as in the case of block, in the case of outburst also there is no monitoring systems. So we need to build this monitoring and monitoring systems in place of identifying all the potential hazard sources, and we need to build our program planning in a very robust scientific based decision making is required. So we need to, I think this is the time we need to pause and think about the ongoing work in this region and assess the vulnerabilities of region, because under the two big programs Government of India is running, one is National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem and another is National Mission on Himalayan Studies by Ministry of Environment and Forest. And these studies, I think it is developing a lot of insights into these issues. And we need to bring that together and decide on the future course of action in terms of developmental activities in the region. And I think this is very important. So climatology also is a factor here. Yes, very much part of the the study spectrum. Yeah. Dr. Manish Mehta wanted to say something, perhaps. He was. I think. I think, sir, our senior Dr. Santosh Rai sir is also connected to us, and he is our in charge also in glaciology. Yes. So he can also explain what he observed, and we have also discussed with him so many points. So maybe he can discuss in a well way. So I think Dr. Santosh Rai sir can also. Yes, Dr. Rai. Yes. Dr. Rai. I could not, sir, get the question. I will ask a general question. The question is, NDMA, does it have, I don't know the structure of NDMA, does it have a kind of a subcommittee which has experts, from glaciology, from climatology, from, remote sensing, and all the contributing factors to such events, so that we are sufficiently prepared, not in terms of scientific understanding of the event, but taking precautions, mitigating and preventing such activities. Is there a group that is specifically working on? Yes, sir. In the last meeting, they formulated two groups, and particularly they constituted two committees. One will go into the details of the reason that led to this disaster, and second one is to recommend that some suitable measures which will try to minimize the damage and losses in case of such things happen again, and it's likely happening in future. So in that area, they have included a lot of expertise institutions like NIH, Wadia Institute, Indian Institute of Remote Sensing, and NHPC, and this IIT Roorkee also, and NDRF and BRO. So they are taking some steps, and it was chaired by Mr. Ata Hussain Saab, one of the member of NDMA, and its report is expected to be submitted within 60 days from now. And yes, they have included all sort of experts, and let us hope that some meaningful deliberation are reflected in terms of this report within this 60 days. Thank you. Yes, Dr. General Ata Hasnain was also mentioning this to me some 2 days back,
that a group has been formed and which will be, working on prevention and mitigation of such events. Now, I particularly wanted to know about one thing. This would be my last question, and then there are some questions from the viewers also. We'll take that. What I wanted to know is, what can people living along the river banks in these vulnerable regions, what can they do to keep themselves safe, not after the occurrence of the event but even before? What can they do? Can they build better structures for living? Can they, what can they do? What could their contribution be in remaining safe? Can I? Sir, please. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने की स्थिति में क्या हम जो गाइडलाइंस जारी की हैं, तो प्री इवेंट, ड्यूरिंग द इवेंट एंड पोस्ट इवेंट, उसमें तीनों के बारे में बताया गया है। जैसे प्री इवेंट में अगर हम बात करें तो वहाँ हमें अवेयरनेस प्रोग्राम या जो भी प्रिपेयर्डनेस है, वहां पर इवैक्यूएशन प्लान क्या होना चाहिए, इस तरह की बातें उसमें बताई गई। ड्यूरिंग द इवेंट तो ऑफ कोर्स बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसके बारे में है। एंड देन पोस्ट इवेंट, तो पोस्ट इवेंट में हम कैसे उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं या उनको किस तरह से वहां पर मेडिकल सुविधाएं हो और जिससे कि हम उनको तुरंत वहां से एड मिले। तो उसमें हर एक, जैसे आईटीबीपी है या आर्मी, इन लोग सब डिपार्टमेंट का उसमें रोल किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिपोर्ट जो एनडीएमए की गाइडलाइंस। तो इस तरह के अगर हम वहां के लोग, दूसरा क्या है कि वहां पर हमने जैसे पहले भी कहा कि हमें फ्लड प्लेन जोनिंग जिसको हम बोलते हैं, कि अगर फ्लड आता है तो वो कितने एरिया में फैलता है, अगर हम उन क्षेत्र को चिन्हित करके पहले से और लोगों को वार्न कर सकें कि अगर आप इस क्षेत्र में कोई भी कभी भी फ्लड अगर इस तरह से, क्योंकि फ्लड इज ए नेचुरल फिनोमेनन तो वो कभी भी आ सकता है, तो उसको अगर हम इस तरह से चिन्हित करके फ्लड प्लेन जोनिंग जो उसके बारे में भी बात की गई है इसमें कि जोनिंग हमारी होनी चाहिए। और हैजार्ड एंड रिस्क जोनेशन मैपिंग की बात की गई है। मॉनिटरिंग, रिस्क रिडक्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स की बात की गई है। मिटिगेशन में हम ये कर सकते हैं कि अगर लेक को इस तरह की वल्नरेबल है तो कैसे हम उसको इस तरह से करें कि अगर वो उसको टूटने से रोका जा सकता है, जैसे कि हम उसमें से पानी किस तरह से कम हो सकता है। जैसे अभी भी बात चल रही है कि जो लेक ऑलरेडी फॉर्म हुई है उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया अपने आप, तो कुछ तो अपने आप शुरू हो जाता है, कुछ हमें उसमें कुछ इस तरह के अगर हम कर सकते हैं जिससे कि अगर उसमें पानी कम कर सके तो वो भी नीचे के क्षेत्रों को उससे बचाया जा सकता है। तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको डेफिनेटली हम चाहे तो किसी भी तरह से वार्न करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मोबाइल के थ्रू है, स्मार्टफोन्स हैं, इस तरह का पूरे क्षेत्र में इस तरह का एक अवेयरनेस के पोस्टर हो या पम्फलेट्स हो, मतलब इस तरह का कोई प्रचार का हमारे को करना होगा जो इस तरह के बंदे इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सर अगर कुछ इस प्रकार का सेटअप रहा होता एनएचपीसी के लेवल से कि एक सबको एक कॉमन ग्रुप से जोड़ा जाए, सारे मजदूरों को, सारे इंजीनियर्स को, सारे अधिकारियों को और डिसीजन मेकर्स को, कि जिससे एक इंफॉर्मेशन क्विकली हर एक आदमी तक पहुंच जाए। ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि एक ग्रुप बना करके सबको कर दिया जाए, तो एक फोन कॉल कुड हैव सेव्ड मेनी लाइव्स। लेकिन इस प्रकार का सेटअप अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण ये चीज अब एक घटना हो गई। तो इससे हम लोग लेसन लेकर के आने वाले दिनों में इस प्रकार के जतन को मैंडेटरी कर देना चाहिए और आगे इस प्रकार की घटना को इससे काफी मदद मिल सकती है। कम्युनिकेशन इज मेन, इंफॉर्मेशन ऐसी चीजों में, जैसे कि उसमें बताया गया कि एक माँ ने अपने बेटे और उनके 5-6 साथियों को फोन के कारण बता दिया और वो ऊपर की तरफ चले गए, तो 5-6 लोग बच गए। अगर इस प्रकार का टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाता तो बहुत सारी लाइफ बचाई जा सकती। थैंक यू सर। और कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं सर बाय इंडिविजुअल्स हु आर लिविंग ऑन रिवर बैंक्स? कुछ कर सकते हैं वो लोग कि बिल्डिंग्स इस तरीके से बनाएं या फिर कुछ? इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को उस वैली में रहने वाले लोगों को के लिए रिवर फ्लड जोनेशन मैपिंग करा सकते हैं कि इन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज डिसाइड कर सकते हैं कहां तक पानी जा सकता है। तो उसको एक कट ऑफ लेवल घोषित कर दिया जाए बिलो विच नो सेटलमेंट शुड बी अलाउड।
only agricultural activities. थैंक यू डॉक्टर। अभी कुछ सवाल आए हैं, देयर आर मेनी पीपल व्यूइंग आवर प्रोग्राम लाइव, उनमें से कुछ सवाल हैं, ये मेनली एक ही कैटेगरी में मैं देख रहा हूँ कि दे आर कंसर्न, दीज आर यंग पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, और मैं एक सवाल जो है, दे आर सीरियसली कंसर्न अबाउट ये क्या होगा कैसे होगा। एक है थिंग्स दैट नॉर्मली हैपन in a geological time scale are happening during a span of a human lifetime. Who is to be blamed? ये एक सवाल आया था। कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में, क्योंकि आंसर्स तो काफी ऑब्वियस भी हैं और थोड़े इलैबोरेट भी किए जा सकते हैं। Yeah. So, this is, we all know that this is all happening, not specific to this event. The general disaster event is most probably, we think that's all linked with climate change. And we all know that we ourselves are responsible for the climate change. So that question, as you said, answer is very obvious. But rather than blaming, it is the time to take necessary precautions to deal with such issues. And I think that is where this disaster preparedness is one of the key aspects, not only on the mountain side, across the world, and especially in the Indian region, because we have the strong monsoon system is feeding us into the entire Indian peninsular region. So obviously that is why we need to be more prepared about the future is not going to be very tough, I think. And we need to be, upscale our preparedness with such issues. Thank you, Dr. Rinoj. There is another question from a young person. Is this a natural or a man-made disaster? Yeah. So at this stage, it is very difficult to answer because there is certainly, they would say, climate angle in that what I am seeing. Because such events occurring in the cryospheric, the frozen areas, and there is certainly a link between what is happening climatologically in this area. The snow cover is reducing, temperature is warming. All that is having a very important role, and I think the deeper studies on this aspect will certainly throw light on this issue. But in a general sense, it is, you can say, because if our climate change is man-made, so it's a man-made. But I don't think that it is anything which is happening in the local scale is influencing such events. इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो नेचुरल कॉजेज भी हैं और मैनमेड कॉजेज भी हैं। और रिसेंटली हमने देखा है कि मैनमेड कॉजेज या एंथ्रोपोजेनिक रीजन से हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है, और क्लाइमेट चेंज होने से ग्लोबल वार्मिंग का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर्स या ग्लेशियल लेक्स पर हुआ है। तो ये नेचुरल, तो मतलब इसमें कई कॉजेज रहते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमारा जो चेंज हुआ है उसमें भी उसका भी इसमें रोल है, और इस तरह का जो रेनोज ने बताया तो कई रीजन हो सकते हैं। तो नेचुरल और मैन मेड को अगर हम कहें तो दोनों का मिक्स है। यस। एक और सवाल है, perhaps we have answered this, but maybe we can answer it better. How can we use such incidents as a learning lesson to mitigate devastating loss of human lives and surrounding nature? I think each event is a learning lesson. As I said, if it is proven to be a something related with breaking off of a hanging glacier and rock mass sliding, and it is certainly a very unique phenomenon. It is not experienced very often. So it added another dimension to our disaster preparedness roadmap. Because so far our focus was on cloud belts, glacial lake outburst floods, and this is added a new dimension to it. So we need to understand this phenomena very thoroughly by
the intense research in the future months and get the bottom of it, how it exactly happened, what is its chronology. And certainly, if it's proven, and then we need to take that aspect into the future planning, in the monitoring and mitigation effort. So it's a big lesson we are learning here through this. Thank you, Doctor. There was another question, which again is obvious, was climate change to blame for this disaster? Yeah, Manish can answer that. Hello? Anybody who wants to answer? Sir, climate change is anyhow, it is happening and it has happened in the past, it is happening and it will happen in future also. It is a collective phenomena. For example, if somebody, some industries are going on in China, so its linkage are also affecting our ecosystem. So the wholesome effect of the entire population residing on the earth will is now linked together. So we cannot remain isolated from others what they are doing. So the climate change will happen, and the only thing is that how to minimize the adverse effect of these climate changes. That is our smartness. And we have to improve our understanding to these climate changes and try to devise our lifestyle and way of living in such a manner so that we can cope with these climate changes. And for sure, we cannot avoid climate change as of now. Thank you, Dr. Rai. Several questions that are coming, I have already asked in one way or the other. Like, is there any geogenic factor? Are there any anthropogenic factors? Are there climatological factors? These questions have been asked and answered. There was also, there is a question here which I had asked earlier regarding whether there is any close collaboration between agencies so as to make real-time data available to a central body that can then take very quick actions and can mitigate these disasters. This question has been asked and answered. There is another particular question, whether the existing practice of dam designing considers debris and rock loads, especially in the upper Ganga region. I would like to answer this question. Yes. In fact, we have received number of proposals, or we can say, to carry out a project on blocks particularly. That, as we know, that every project is means at the time of construction some design flood we are taking. So in addition to that design flood, what will be the flood which will come in case of a lake burst? So that we are giving that magnitude of flood will come at that particular point. As you have said that mud debris or mud flow, how much that has been taken into account. So as such, we have not means that study, I think, has not been carried out, how much mud or debris will come along with the water. So whatever we are doing, that is what amount of water will come at that particular point, and what will be the velocity. But debris and mud so far have not been made available to any agency. Related to this, there are some questions because dams seem to be causing a lot of fear among people. There's a question: the cumulative effect of hydropower projects have turned out to be more environmentally damaging than sustainable. Please give your viewpoint. This is a question from one of the viewers. जैन साहब, अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं इसमें. If we say that hydropower projects, they are more, we can say that environmental friendly, because there is no like pollution and all that, those things. And if you remember that in case of 2013 flood, Tiri Dam, and that the volume of water which was there at that time,
and because in the month of June that reservoir was not having that much of water, so a lot of volume of water was stored in that particular reservoir, so that the area downstream was not that much affected. That is one thing. So the hydropower project, run of the river scheme, I can say they are safe in one way or other, but we have to keep in mind the number of factors that are there in that particular region before construction of these projects. So, Dr. Enos, you would like to add something? In fact, I would like to add a question here so that Dr. Rinoj can answer that also. Someone wants to know, how do the reverberations from dam constructions and tunnel building impact geological stability of glaciated regions? Yeah, this is very an important question. What I wanted to say here is that in the higher elevation region, we have a number of glaciers. You know, in the upper Ganga basin, we have around 1,700 square kilometers of glaciers and around 140 cubic kilometers of glacier, water stored in this glacier. And that's a huge water reserve, water resource we have. And how to make use of that, the positive effect of glacial melt is a very critical question. Now, if you are not making use of this water resource and for tapping the full potential of glacial resource, we need to put these structures at an appropriate distance away from the glacier so that the glacier, the interannual variations of discharge is minimized by the glacial melt, and that is the job of the glacier actually. So we need to think about that, whether we need to use these resources to the benefit of the society. Now, the question asked is whether it is having an impact. And I am certainly believe that the technology we use for any infrastructure development is the key issue here. We have a technology which can make tunnels without blasting. And blasting is certainly not good, be it hydropower, be it road construction. We all know that it creates a lot of damage to the entire system there. Even the springs in this region can divert. A lot of other questions in our institute is saying, lot of effect of blasting. So, but we need to have better technology and better thinking with emerging signs of disasters in this region, whether in a particular place. For that matter, the commodity maybe, I may say, from my our research experience, is the worst place to have any kind of thing because it is a hotspot. And we need to have this better science has to feed into the policy planning, and then we make a informed decision and the best technology, bring in the best technology, and many things can be avoided. And there may be many best suited sites in the upper reaches. As you know that I have already said, the 80% of the glacial resource in the upper Ganga basin is in a monsoon deficit zone. Beyond that topographic control, the monsoon doesn't penetrate. There we don't have cloud burst happening. And 80% of the glacial resources in those areas. Why can't we tap glacial resources in those areas? Because most of the damage is building or proposed in the southern slopes. So there are a lot of policy issues and better science will certainly provide a better answer. And we need to pause and rethink about our development strategy. That's what I wanted to say. Thank you so much, sir. I mentioned Nepal earlier. There is another question related to Bhutan. Viewer says the Thorthomi Glacier Lake in Bhutan has been tamed, he says, and why doesn't India take such precautionary steps? Would somebody like to address that question? Yes. Can you repeat the question, please? There are several steps taken by Bhutan to tame the Thorthomi Glacier Lake. Why doesn't India take precautionary steps like this?
I would like to reply this question in that way. In Sikkim, as I have said, in Tista Basin, South Lonak, which is considered to be a vulnerable lake, in that recently a project has been formulated in which they are planning to have early warning system with the Swiss agency also. They will take support from the Swiss Development Center in India. So this will be a multi-institutional project in which it is planned to install early warning system and monitoring of that lake, and all that instrumentation will take place at that lake. So that pilot project, like I have said, NDMA has recently issued guidelines, and this comprehensive project for South Lonak Lake has been formulated. It is in now in the advanced stage. So that is there. So the steps by different agencies are being taken to tackle the problem of drought and other this kind of disasters. Thank you, sir. And then there is one final question. Should urbanization of hilly regions be avoided? And if there is urbanization, can we go in for wind and solar power rather than hydroelectric power? Sir, I would like to respond this question. Yes, sir. That urbanization, whether it should be in form of urbanization or population support, you can say, but it is very much required, particularly in the higher reaches, and that too in light of the present intrusions of Chinese side. Because if our remote areas are not populated with people, so there is also a problem which has been manifested in form of a lot of migration of high reaches people. That is वो जिसको पलायन आयोग भी उत्तराखंड में बनाया जा चुका है. तो हमारे जो सीमांत गांव हैं वो खाली होते जा रहे हैं. तो ये देश के और अपने मुल्क के इंटरेस्ट में है कि हमारे लोग वहां रहें और अपनी जमीन पर अपना दावा करते रहें, जिससे कि निकट भविष्य में हमारे देश से चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन अपने आप ही स्वयं ही अवॉइड हो जाए. तो ये बहुत जरूरी है कि अपर रीचेस में हमारे लोग विद्यमान रहें, नंबर 1. दूसरा क्या है कि उनके बसावट और उनके पॉपुलेशन का अंदाज और तरीका क्या हो, ये ऑलवेज एक रिसर्च का विषय है, जिस पर हम साइंटिस्ट, सोशलिस्ट और जो मीडिया के लोग हैं वो बहस कर सकते हैं, लेकिन उस पॉपुलेशन को वहां से हटाना किसी के तरह से अच्छा नहीं है. और इसके लिए क्या होगा कि जैसे कि मैंने बताया कि, और दूसरी चीज है कि ये पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बनने चाहिए. मैं इस बात का कतई समर्थक नहीं हूं कि वहां के सारे प्रोजेक्ट बंद कर दें. जैसे फॉर एग्जांपल अभी चोपड़ा साहब की कमेटी ने 23 प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करने का तत्काल प्रभाव से किया था. इससे मेरा इख्तिलाफ है. मैं चाहता हूं कि उन्हीं को जो बहुत ज्यादा हानिकारक है उन्हीं को बंद किया जाए, जबकि कुछ को शामिल रखते हुए उत्तराखंड की आजीविका का साधन ही है टूरिज्म डेवलपमेंट, रोड, उनको हॉस्पिटल, उनको स्कूल, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनको मार्केट क्यों नहीं चाहिए, या उनके एस्पिरेशंस नहीं है अपर रीचेस में. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग हर बात पर प्रोजेक्ट को बंद कर देने की वकालत करते हैं, वो लोग विदाउट एसी के कमरों में नहीं रह सकते. उनको देहरादून नहीं चाहिए. क्यों ऐसा है? हमारे देश के वो लोग भी हैं नागरिक, और उनको भी फैसिलिटीज चाहिए. तो इस चीज का इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में बैलेंस बनाते हुए, साइंस की मदद लेते हुए हम लोगों को अपनी पॉपुलेशन को वहां विजिट करनी चाहिए. थैंक यू डॉक्टर साहब. एक आखिरी ये कमेंट है, सवाल मैं नहीं कहूंगा, कि ये क्लाइमेट चेंज या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी ये सब पहले भी थी, अभी हमें इनके बारे में ज्यादा समझना चाहिए और मिटिगेशन के बारे में सोचना चाहिए. ये एक सज्जन का एक कमेंट है. कोई उस पर कुछ काउंटर कमेंट या कुछ देना चाहेंगे तो वेलकम. तो मैं एक थोड़ा सा बोल करके कहना चाहता हूँ. जी. तो क्लाइमेट चेंज की जैसे कि पहले भी बात की है कि जो अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखने को मिला है, 30-40 ईयर्स की अगर हम बात करें, और हमने डाटा को एनालाइज भी किया, टेम्परेचर डाटा हो या प्रेसिपिटेशन डाटा हो या ग्लेशियर रिसीडिंग की हम बात करें, और टेम्परेचर चेंज होने से ग्लेशियर्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो वो क्लाइमेट चेंज का जो स्टडीज है
पिछले कुछ सालों में, जैसे कि आपने भी बताया, कि बहुत हुई हैं। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल IPCC ने भी अपनी रिपोर्ट कई दी है। डाउन स्केलिंग कैसे हो, उसके लिए भी हमारे पास फ्यूचर सिनेरियो है, उसमें ग्लेशियर चेंज कैसे होगा, टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, उसके बारे में भी काफी रिपोर्ट हाल ही में आई है। तो ये जो फिनोमिना है, इसके ऊपर काफी स्टडीज अभी हुई हैं, चल रही है काफी क्लाइमेट चेंज पर। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो नाम है, उसमें भी क्लाइमेट चेंज अब ऐड हो गया है। और काफी इस तरह की रिपोर्ट्स IITs है या और इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक क्लाइमेट चेंज पे एक कमेटी है, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके तहत डिफरेंट बेसिन्स में क्लाइमेट के साथ क्या चेंजेस होंगे वो स्टडी करने के लिए डिफरेंट IITs, ISCs और अदर इंस्टीट्यूट को स्टडी दी गई। डॉक्टर रेनोल्ड्स, कुछ आप ऐड करें? I agree with what you have mentioned, but I only wanted to highlight that Himalaya is a very tough terrain, and all the snow and glacial systems in very high elevations and very complex atmospheric and land surface processes is operating. And if you wanted to understand this complex system, as you would like to know, I would like to inform you that it is not a straightforward impact of climate warming and then all the snow and glaciers are melting across the Himalaya. It is not so. In the Karakoram mountains, the high elevation glaciers are actually static, or it is even growing. And in the upper Ganga basin also, under this NMC project, the study which we did showed that in the lower elevations snow cover is reducing, but in the upper elevations snow cover is increasing in the month of June and July and August. So it is a very complex system in place. So to understand this, the infrastructure monitoring in the high elevation is, it is not at all sufficient. We have very few number of stations, climate stations beyond 3,000 meters, and we have very few glaciers are studied across this vast Himalayan terrain. And I would certainly say, as an individual working in glaciers for the last 30 years, what we understand today about our glacial systems are not enough to provide policy input as of today. So that is why, as we go along with understanding the systems, we may have to make course corrections, and this we have to be ready for course correction, and we should, under the scenario which is emerging, the thing is that we should have a very robust infrastructure to research on this issue. And climate change research is not a piecemeal effort. It's a sustaining, long-term research is required to understand climate change impact on the system. And we need to strengthen our institutions to study this huge, cryospheric system we have. And then only we will be able to provide insight to the policy planning and all this kind of things. So we may have to be ready for course correction as we go along, understanding the climate and climate impact on the Himalaya better. Thank you, Dr. Reynolds. There is one final question. Sir, one point I would like to add Yes. in Thanos response. Yes, sir. Because Thayan sir said very well that glacier का जो response and reaction time है sir, सबका अलग अलग होता है, और precipitation temperature का रोल जो है एक जैसा नहीं है पूरा हिमालय पे. There are orographic barriers. वैलीज कहीं पे डीप है, कहीं हायर एलिवेशन पे है. तो एक हमारा रिसर्च आर्टिकल भी है नंदा देवी ग्लेशियर रीजन पे, लास्ट ईयर हमने उसको पब्लिश किया था. तो उसपे हमने वही रोल बताया है कि प्रेसिपिटेशन जो है वो वहां पे ज्यादा सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है ग्लेशियर्स की. टेम्परेचर तो एक फैक्टर है ही सर, लेकिन प्रेसिपिटेशन जो है अगर वो नहीं मिलेगा, फीडिंग नहीं होगी, तो ग्लेशियर को स्टार्वेशन होगा, इट विल स्टार्व एंड इट विल ऑटोमेटिकली श्रिंक डाउन. दैट्स व्हाई द थयन सर इज सेइंग वेरी राइट कि ओरोग्राफिक बैरियर्स के हिसाब से अगर हमारे पास ग्राउंड डेटा नहीं होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि इस रीजन में ये हो रहा है और इसमें ये, बिकॉज जियोमेट्री आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि ग्लेशियर का टोपोग्राफिक कंट्रोल क्या है, उसका जियोमेट्री क्या है, उसका एस्पेक्ट क्या है. क्योंकि साउथ फेसिंग ग्लेशियर्स और नॉर्थ फेसिंग ग्लेशियर्स के एरिया में बहुत डिफरेंस होता है सर, कि वो रिसीड कर रहा है, साउथ फेसिंग ज्यादा वेकेट कर रहा है, नॉर्थ फेसिंग कम वेकेट कर रहा है, क्योंकि इंसुलेशन कोई ग्लेशियर ट्वाइस रिसीव कर रहा है. So these are the points. So relating these points to one canopy like climate change is affecting the glacier, it's very challenging task to answer because there are a number of factors also playing a critical role. Thank you, sir. Very true.
एक सवाल था बस, किसी को जानना था, what is the main cause of hanging glaciers? So hanging, yeah, hanging glacier is a very natural phenomena and naturally made. The only thing is that there are many classifications of glaciers. There are valley glaciers, there are complex glaciers, there are ice upfronts. So this is one of the classification. The glacier which is formed along the slopes, which is not sitting in a valley, along the slope of a ridge and a slope which is higher than 30-35 degree, and so it looks like a hanging glacier, hanging ice mass, and that is the technical term is hanging glacier. And we have a number of hanging glaciers across the Himalaya. Yes. Thank you, Doctor. If all of you have any concluding remarks to make, we can take the concluding remarks and then proceed towards the end of the program. Any concluding remarks from anybody? James sir? Dr. Jain, any concluding remarks from your side? कंक्लूडिंग रिमार्क्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इनको रेगुलर मॉनिटरिंग, जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे हैंगिंग ग्लेशियर की बात की है या ग्लेशियर चेंज की बात की, विनीत ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें क्लाइमेट चेंज के साथ साथ टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, जो भी, मतलब हमें पूरा ग्लेशियर और ग्लेशियर लेक की रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो गाइडलाइंस में भी कहा गया और कई बार बात भी हुई है, फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट भी बना है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है कि इन केस इस तरह के डिजास्टर होते हैं तो हमें डाउन स्ट्रीम एरियाज को कैसे वहाँ के लोगों को सुरक्षित किया जा सके या कम से कम नुकसान वहाँ पर हो। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारी रेगुलर मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ हमें प्रिपेयर्डनेस हमारी हो, जिससे कि डाउन स्ट्रीम एरियाज को हम सेव कर सकें और वहाँ के लोगों को वार्न कर सकें, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, इस तरह की जो भी हम मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि हम वहाँ पर लॉस को मिनिमाइज कर सके, वो हमें करने होंगे और इसके बारे में और ज्यादा जागरूकता और प्रिपेयर्डनेस करते हैं। Thank you, Dr. Jain. Dr. Rinoj, any concluding remarks from your side? Yeah, I want to say that we are going through very tough times as far as the Himalayan climate and impacts are concerned. And it is a fact that there is a lot of knowledge gap existing in the science of the Himalaya. And all these things actually, because of this, our developmental roadmap most of the time is not considering the scientific input which is emerging, because there is a lag of incorporating the scientific results which is happening to the policy realm. There is a lag which is existing. So we need to have a better communicating, institutionalized conduits for scientific research which is happening to the policy realm. And that is very important. We cannot wait for, because the science becomes science when after a considerable period of time. Because if I publish a paper, that is not it is a hypothesis or something, which is I am suggesting, and it required to be built on science because of other supporting publication, supporting insight, and then it becomes actual scientific knowledge, and then it translates into the policy planning. But in the present scenario, we don't have that much of time to wait for to make that clear-cut scientific insight. So we need to create systems where this knowledge is being transferred much faster to the policy planning from research institutions like us to because the lot of insight which we are generating in the National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem and NMHS is very useful for planning. Like we did one of my colleagues, Dr. Prabhat Misra, is doing a cloud-based study. It's very useful for planning. We are first time we are suggesting which is the area which is very vulnerable. So we cannot wait for that much time to incorporate this insight in the planning, and we need to create better institutional mechanisms for this. And that is my conclusion. Thank you very Dr. much. Rinoj. Any concluding remarks from Dr. Rai? Yes, sir.
I want to just suggest that there should be a better funding on science and technology as compared to what is being spent as of now. In a scenario where we are facing with lot of flood and disaster and the seismic event, in particularly in the mountainous region, and which is causing lot of damages and destruction in that area, and at the same time many of the centers and research institutions and organizations are merged, disengaged, and closed down at the present time. So this is something where our deciders should think about, and as a national institute and as a national communicator like you or your institution, it should be displayed at the right forum, because whatever we are speaking may not be heard one to one, but you are the bridge between us and the government. So I would request you to kindly pass this message on to the right people. Thank you. Thank you, Dr. Rai. You made a very important point. In fact, I sincerely hope that we as the Apex Science Communicating Organization of India, we will be able to take both the concerns of the scientific community as well as the concerns of the viewers who watch this program to the proper people, to the proper deciding authorities, so that action can be taken on actionable fronts. And now may I request Dr. Mehta to give his concluding remarks, please. Concluding. Yeah, basically we should make some relationship with local people and the रीजन नेचर, बेसिकली कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को हम लोगों को अवेयर करना होगा जो माउंटेन टेरेन में रहते हैं। तो अगर वो लोग अवेयर होंगे, जैसे अभी इस डिजास्टर में हमने देखा कि जो लोग ऊपर से वीडियो बना रहे थे या जो सब चीजें वो कर रहे थे, शेयर कर रहे थे सब चीज, तो लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि एक्चुअल में कंडीशंस हुई क्या। हमने कुछ लोकल लोगों से वहां पे बात की तो ये पता चला कि वो लोग ये बोले कोई लैंडस्लाइड हो रही, मतलब फ्लड और ये सब चीजों की वो बात नहीं कर पाए। जब लास्ट मोमेंट पे जहां पे पहुंचे वो कंडीशन, जहां पे फ्लड और ये डिजास्टर, ये टोटली स्लगी मटेरियल जब पहुंचा, तो तब उन्हें लगा कि यार इसके साथ वाटर कंटेन और ये सब चीजें आ रही है। तो हमें मतलब हमारा जो मेन एम्फेसाइज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी माउंटेन रीजन, हाई माउंटेन रीजन के ह्यूमंस है या जो वहां के रहने वाले लाइवहुड लोग वहां पे है, उन लोगों को ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि भाई एक्चुअल हमारे पास क्या क्या यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम्स के बारे में वो लोग ज्यादा जान पाएंगे, वो लोग वहां पे रहते हैं वो ज्यादा जान पाएंगे इन कंपैरिजन टू और जो हम नीचे प्लेन्स में या लैब्स में जो भी एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे उन लोगों को पहले अवेयर करना पड़ेगा भाई कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे है और क्या कंडीशंस आपके लिए फ्रेजाइल या वल्नरेबल डेवलप कर सकती है या जो आपके लाइफ को लॉस कर सकती है। आप ये सब चीजें देख करके और एक सिस्टम टाइप का एक गांव में जो गांव होता है वहां पे थोड़ा सा अवेयरनेस एक प्रोग्राम यहाँ पे हम लोगों को लाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि गांव वाले समझ जाएंगे कि यार ये रॉक या ये बोल्डर या ये आइस, इसमें क्रैक्स डेवलप हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ये कल नीचे डाउन स्ट्रीम में कुछ डिजास्टर कर सकता। तो वो एजेंसी को, जो भी पॉलिसी मेकर है या जो भी एजेंसीज है, उन एजेंसी को ये सब चीजें वो बताएं, कन्वे करें या बताएं कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन होने वाली है। क्योंकि विदाउट लोकल पीपल के हेल्प से या माउंटेन पीपल के हेल्प से हम लोग ये हम भले साइंटिफिक बहुत सारी चीजें और बहुत ये सब जितना भी है वो सब हम बना लेंगे साइंटिफिकल, लेकिन हम ये नहीं कोशिश कर पाएंगे कि एक्चुअल में जो कंडीशंस है जो वहां पे रहते हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है और उनको क्या चीजें सिखानी है उनको और कैसे उनको अवेयर करना है ये सब चीजें। क्योंकि जितने भी डिजास्टर में जितने भी डेथ होती है, जो भी लोग होते हैं वो मैक्सिमम लोग जो है लोकल लोग होते हैं। तो अगर वो इस चीज से अवेयर हो, इस चीज को समझे कि एक्चुअल में यार हमें जैसे सपोज वही जो भी हैंगिंग ग्लेशियर टूटा है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज बीच में हुई होगी, तो पैंग से जो है लगभग ऑलमोस्ट दिखता है, वो काफी चीजें उस रीजन में दिखती है, कुछ आवाज आई होगी, कुछ स्लाइड या कुछ धूल उड़ती होगी। अगर उनको पता चल जाता है सब चीज पहले ही, तो वो लोग वहां से हट सकते थे या नीचे बता सकते थे डाउन स्ट्रीम में भाई कि ये प्रोसेस वहां पे हो रही है, और उनकी बातों पे हम लोगों को भी विश्वास करना होगा कि एक्चुअल में क्या वो सही बात बोल रहे हैं या नहीं है, लेकिन हमें उन पे विश्वास करना पड़ेगा और कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे उन चीजों पे।
थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर मेहता। डॉक्टर विनीत कुमार, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सर, जैसा कि संतोष सर ने भी पहले कहा कि एक हमारे पास कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम रहता है लोकल लोगों से। जैसा मेहता सर ने भी बोला, रेनो सर ने भी यही बोला और जैन सर ने भी बोला कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। चाहे हम आपस की बात कर रहे हैं या लोकल पीपल जो किसी रीजन में नहीं है, तो मे बी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम भी वहां रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फोन कॉल्स भी नहीं लगते हैं आपके, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका सर्वर कौन सा आप यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का सिम ले रहे हैं। तो सारी कंपनी के सिम एक जगह पे जाके कभी कभी कोई नेटवर्क काम करता है, कभी नहीं करता है। तो कोई ऐसा सिस्टम रहना चाहिए जो वहां की कंडीशंस के हिसाब से, और नीचे जो डाउन स्ट्रीम पे है तो उससे कनेक्टिविटी उसकी प्रॉपर हो सर। लाइक अगर वो कोई फोन करना भी चाह रहा है और उसका कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रहा है और विंडो हमारे पास 30 to 40 सेकंड और 2-3 मिनट का होता है, तो वो डिवास्टेशन हो ही जाएगा। तो एक ऐसा दूसरा एजुकेशन और प्लस मैन पावर को हमें ट्रेन करना चाहिए सर। लाइक साइंटिफिकली अगर ग्लेशियर और इन सब की बात कर रहे हैं, तो वी शुड हैव अ मैन पावर टू ट्रेन, बिकॉज इंडियन हिमालयाज में हमारे पास 9,500 ग्लेशियर हैं। जैसे रेनो सर ने पहले भी बताया कि डेटा सेट बहुत कम है, देयर आर लॉट्स ऑफ गैप एरियाज, सो वी शुड ट्रेन टू द स्टूडेंट्स आल्सो। स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी एक छोटा ऐसा ही एक कॉन्फ्रेंस टाइप करके हमें उनको इन सब चीजों से भी अवेयर करना चाहिए, लाइक कि हाँ ऐसा हो रहा है नेचर में, सोसाइटी में ऐसी चीजें भी होती है, तो दे शुड बी प्रिपेयर वेल दैट कि इन फ्यूचर मुझे ऐसा टास्क लेना पड़ेगा, सो दे शुड हैव द माइंड मेकअप। सो ऐसा करके ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनीत कुमार। हमारे जो दर्शक जो जुड़े हुए थे हमारे साथ अभी तक, उनके लिए आई मस्ट थैंक देम वेरी वेरी सिंसियरली कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, और उम्मीद करता हूँ कि दे बेनिफिटेड फ्रॉम what our experts talked about today, and some of your questions were raised on your behalf here, and they were also answered. And if you have any more questions, our program is on YouTube. It is available on YouTube. You can give your comments, you can give your questions on that. हम उन्हें पास ऑन करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स को, और हमारे एक्सपर्ट्स जब आंसर करेंगे वो आंसर्स यहाँ पे पोस्ट किए जाएंगे, या एक्सपर्ट्स खुद इस यूट्यूब वीडियो में नीचे अपने कमेंट्स दे सकते हैं। सो आई थैंक ऑल आवर एक्सपर्ट्स, डॉक्टर जैन, डॉक्टर विनोज, डॉक्टर संतोष कुमार राय, डॉक्टर मनीष मेहता, डॉक्टर विनीत कुमार, आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, और हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों से जो सीखने को मिला उससे अथॉरिटीज तक पहुंचाने की कोशिश करें, एग्जीबिशंस बनाएं, हमारे विजिटर्स जो हमारे साइंस सेंटर्स में आते हैं उन तक पहुंचाएं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ अभी तक। So through this platform, I once again extend my thanks to all the viewers and request them to see and visit the nearest science centers which is in their location. And this all information will be also available at our social media platforms, Facebook, YouTube, and website. So I request the audience to kindly visit these platforms and always get updated information about our programs and about the contents of various scientific and technological research. इसके साथ साथ में आज जो पैनलिस्ट थे उन सबका भी धन्यवाद देते हुए, और हमारे जो शिक्षा विभाग के प्रमुख श्री एन.आर. रामदास अय्यर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को पूरा करने के लिए रेगुलर गाइडेंस दिया और इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया। उम्मीद है कि आपके पास में काफी इंफॉर्मेशन विभिन्न साइंटिस्टों के थ्रू पहुंच गई होगी। आपके सवाल भी उसमें आप डाल सकते हैं, एंड वी विल वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड इन्वॉल्व द साइंटिस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो विद दिस नोट, थैंकिंग एवरीबॉडी, द NSCD education team and all the scientists, viewers, once again thank you. We close the program. Thank you so much. Thank you.